And so, good evening to all of you. Shubdeep, Swapnil, Sagar, can you all hear my voice? I'm audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, shall we start? Actually, I was waiting for Sagar to join. So, let's start it now. As I told you that today I'm going to discuss with you the interim budget which has been presented today in the Parliament of India. So normally interim budget is presented in the Parliament of India just before the general elections are conducted. As we all know that in April 2024, hello, I'm audible. Yes, sir. Can you see the screen? Is it visible to all of you? Screen is visible to all of you, right? Is it visible Yes, now? sir. It's Okay, fine. And so as I was telling to you that today in Parliament of India, interim budget has been presented. So normally, interim budget is presented in the Parliament when the Lok Sabha term is near to be completed. As we know that 5 years back, the Lok Sabha elections were conducted and Prime Minister Modi became the Prime Minister. So now in April 2024, the next general election, that is next Lok Sabha elections are stipulated and it is scheduled. तो नॉर्मली कैसे होता है ना इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी whenever a new government is supposed to be elected in coming 2 to 3 months, and as we have discussed that in India majority of the important decisions are taken by the parliament, including the budget or including the financial statement. तो अब ये 2024 में नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होगा, वापस से नई गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो जो बजट जो होता है आने वाले पूरे साल भर का जो बजट होता है दैट इज एक्चुअली लेफ्ट विद द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई इलेक्शन से पहले जो शॉर्ट टर्म जो पीरियड है लाइक अराउंड 2 to 3 months आर लेफ्ट बिफोर द जनरल इलेक्शन. So for this upcoming 2 to 3 months, whatever the important and necessary expenditure should be made by the government, that needs to be approved by the current the parliament, and that is the reason that why this interim budget is present. So today's budget was an interim budget, it is not a full budget. Full budget will be presented in the parliament after the newly the formed government. That's what I have discussed here. So let me read it out so that you can understand what exactly the interim budget is. Okay? So an interim budget is a temporary financial plan presented by the government during the transition period when a new government is about to take office. Now ये आने वाले जो 2-3 महीने हैं, this is a transition period where the elections will be conducted, a new government will be formed. So it is typically covers. अब इसमें क्या होता है ना? It typically covers the immediate financial needs of the government until a full budget is presented by the incoming government. So ये जो budget होता है, interim budget जो होता है, in this interim budget, not all the aspects of the government budget which we have discussed in the basics of Indian economic class. जब इंडियन इकोनॉमी की क्लास हमने जब की थी तो उस समय मैंने देखा था कि देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट लाइक direct taxes, indirect taxes, then tax revenues, non-tax revenues, and planned expenditure, non-planned expenditure, revenue receipts and revenue expenditure, all these various components of the government which we have discussed in the basics of the Indian economic class. ये सारी चीजें उसमें सारे तो नहीं होंगे, बट जो बेसिक नेसेसरी जो गवर्नमेंट के जो खर्च होंगे आने वाले 2 महीनों में जो खर्च होगा उसके लिए ये बजट बनाया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरिम बजट. In 2015, like immediately after the 2014 जनरल इलेक्शन, 2014 के जनरल इलेक्शन के बाद में 2015 में जो यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उस समय में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, that what is the difference between interim budget and vote on account, right? Any idea about it? आप लोगों में से किसी को पता है कि vote on account which is a regular process in the government budget and interim budget, इन दोनों में क्या फर्क होता है? Any idea?
सागर और शुभदीप और ओमकार, आप लोगों में से किसी को पता है ये दोनों में फर्क क्या होता है? इंटरिम बजट तो क्या होता है मैंने आपको बताया, बट व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट? सागर, एनी आइडिया? यस सर, वोट ऑन अकाउंट जो होता है, अगर गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है तो मतलब जो भी टारगेट रखा। सागर, यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट तो योरसेल्फ। यस। देन उसके ऊपर वोट ऑन अकाउंट होता है सर, पार्लियामेंट में, सिर्फ इन लोकसभा में। यस। तो वोट ऑन अकाउंट इज बेसिकली व्हाट रेगुलरली जब भी गवर्नमेंट कोई बजट बनाता है और उसमें उन्होंने प्लान किया है कि इस साल में हम इतने रुपए खर्च करेंगे, तो सपोज अगर जितना टारगेट किया है उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट को खर्च करना है या गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो उस समय में लोकसभा की परमिशन लेकर कुछ नए एक्सपेंडिचर को ऐड किया जाए। न्यू एक्सपेंडिचर इज एडेड इन वोट ऑन अकाउंट एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वोट ऑन अकाउंट. But interim budget is like full budget only. What is mentioned here, that the interim budget includes estimates for government revenue and expenditure for a short term. मतलब इसमें दोनों है, like it includes both revenue as well as expenditure. While vote on account it includes only expenditure. Expenditure मतलब क्या, कि अगर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बजट बनाया हुआ है और गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसों की जरूरत है, इन्हें और ज्यादा खर्च करना है, तो गवर्नमेंट खर्च कर सकता है, लेकिन खर्च करने से पहले पार्लियामेंट की, स्पेशली लोकसभा की मंजूरी लेना जरूरी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्लियामेंट की मंजूरी ली जाती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वोट ऑन अकाउंट. So vote on account does not include the revenue aspect of the budget, while interim budget includes both. मतलब कहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा या आने वाले 2 महीने में, और आने वाले 2 महीनों में गवर्नमेंट कहां खर्च करेगा, that is what is given in this interim budget. All of understood what is the difference between the government budget and the interim, vote on account and interim budget? Is it clear? So the interim budget includes estimate for government revenue and expenditure for the short term and is usually intended to maintain essential services and avoid a financial vacuum during the transition period. तो इस पीरियड में कोई मेजर डिसीजन या कोई मेजर स्कीम या कोई मेजर पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की जाती है, कोई नया स्कीम या कोई एक नया पॉइंट डिक्लेयर नहीं किया जाता है. दैट इज व्हाई आपने देखा होगा कि आज जो गवर्नमेंट का जो इंटरिम बजट जो प्रेजेंट किया गया है उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज नॉट अ फुल बजट, इट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म बजट. ठीक है. So normally during an election year, the incumbent government cannot present a full budget. Therefore, an interim budget that covers the government expenditure and revenue for a short period is presented. Since the Lok Sabha term will over in the next month, an interim budget is presented today. So full budget will be presented after the Lok Sabha elections by the newly formed government. So this is just a concept about what is the interim budget. So let's see what were the important highlights of the today's interim budget. Those who have attended my basics of Indian economic class and those who have understood what are the various components of the government budget, like revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts, capital expenditure, then tax revenues, non-tax revenues, planned expenditure, non-planned expenditure. All these things we have discussed in the basics of Indian economic class. So they will be अब इसमें जो भी मैं डिस्कस करूंगा शायद उन्हें समझ में आ जाएगा. उसके अलावा when I was I have discussed and I have explained the government budget, तो उस समय में मैंने कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट बजट वो भी मैंने आपको बताए थे, तो वो सारे चीजें इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको समझ में आ जाए. So from the fiscal deficit target and government capital expenditure, her message to rating the agencies, here are 10 key takeaways from the finance minister Nirmala Sitharaman's post budget press conference. So she has taken a post budget press conference today. Nirmala Sitharaman is a finance minister of India. So what are the important highlights of the today's budget that we will try to understand? So finance minister Nirmala Sitharaman stressed on 5 disha nirdesha, matlab 5 directions on which the government is going to focus in this upcoming the months. आने वाले 2 महीनों में कौन से दिशा में गवर्नमेंट का खर्च रहेगा और कहां से गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर. So as per that 5 disha nirdeshak, social justice as an effective governance model. In GS paper 2, there is one topic called social justice, and within that social justice we know
various government schemes, various welfare policies, all these are included in the social justice. Sir, you are not audible. Am I audible to you now, Sagar? Sorry. Am I audible? Yes, sir. Okay. So the first highlight of this interim budget is that our finance minister has given 5 important, the priority areas that social justice as an effective governance model. So as per the finance minister, social justice is going to be an effective governance model. We have seen that in UPSC GS paper 2, there is one topic called social justice. Like government has certain welfare schemes for the marginalized section of the society. So as a part of that, government is going to use social justice as an effective governance model. Even in Constitution of India as well, we have seen that in DPSP, social justice is one of the important aspect of the you know uh, uh, objective of the Constitution of India as a part of the social justice. So government is going to focus more on poor, youth, women, and annadata. So marginalized section of the society अभी फिलहाल कौन है? Poor are the marginalized section that is below poverty line. Then youth. Why youth? Why youth have become the marginalized section of the society now? Normally youths are Because, not sir, vulnerable or youths are not marginalized नहीं होते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से youth have become marginalized or youth have become vulnerable section. So what is that meaning of vulnerable section and why youth has become the vulnerable now? Yes, Sagar. because of, sir, youth were not getting an adequate opportunity of employment and Yes. So why they are skills. not getting Job. employment? Because they are not employable. Why they are not employable? Because they do not have adequate skill, right? And उसके अलावा भी there are certain government policies as well which are not leading to the jobs, like economic growth नहीं हो रहा है, private sector में investment उतना नहीं बढ़ रहा है. There are some other factors as well, but anyways we will discuss it later on. So in these 5 disha nirdeshak, government is going to focus more on poor, youth, women, and annadata, that is farmer. And of course government का focus on infrastructure is also going to be there. GS paper 3 topic, use of technology to improve the productivity. It may be improving the productivity in agriculture sector, improving in the productivity in manufacturing sector, increasing the productivity in services sector. So government is going to focus more on the technology to improve the productivity, and high power committee for challenges arising demographic challenges. So can anybody tell me what is this demographic challenge? मतलब एक हाई पावर कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाने वाली है for addressing the issues of demographic challenges. So what is this demographic challenge? Any idea? Yes, sir. We have a lot of working age people, but we don't use it adequately. That is demographic challenge, sir. We are not using, they are not getting proper skills, they are not getting jobs, Yes. or you can say demographic dividend में convert नहीं हो रहा है, right? So Yes, yes, sir. majority of the Because, population, as we all know, that India is one of the youngest the country in the world in terms of the young population. So despite of that young population we have, we should take the advantage of it. हमारा वर्कफोर्स बहुत यंग है, पॉपुलेशन हमारा यंग है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है ना कि they are not getting proper channels. That resource, that human resource is not optimally utilized. उसका optimum utilization नहीं हो रहा है, and this is the major challenge in front of the development. तो challenge में वही है, skilling to this youth is challenge, then keeping them motivated is a challenge, then giving them advanced technologies, advanced skills, helping them in getting jobs, helping them in starting their own businesses, helping them in have startups, companies, etc. These are all the challenges in the demography. तो इन challenges को address करने के लिए एक high power committee बनाई जाए. So basically, you can say these are the major challenges in front of the Indian economy now. That farmers are, they are not getting right remunerations. Women are also vulnerable. Youths are also vulnerable. Below poverty line people are also vulnerable because उनका income नहीं बढ़ता जा रहा, तो inflation का सबसे ज्यादा effect वो लोगों पे होता है.
देन अब इन सारी चीजों को करने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और टेक्नोलॉजी की मदद से इन डेमोग्राफिक चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाए. Got it? So now second highlight of this interim budget that India has 3 consecutive years of 7% of GDP growth. Today I was watching one of the interview of mm, there is one BJP leader. His name is he was earlier the part of the Swatantra Party. Now recently, like around 5 to 6 years back, he has joined BJP. Subramaniam Swamy. Have you ever heard about Subramaniam Swamy? He is one of the economists, and he is a Harvard graduated as well as he used to teach in the Harvard University. So there's a different, the topic, or there's a different, issue that as per him, जितना गवर्नमेंट के द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है उतना एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हो रहा है. वो इश्यूज एक अलग टॉपिक को हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे. बट एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज सेइंग दैट कि इंडिया इज हैविंग 3 consecutive years of 7% ऑफ जीडीपी. मतलब पिछले 3 साल से लगातार इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7%. So what is GDP growth rate that we have already discussed, and it is going to be the fastest growing economy in the G20. जितने G20 countries हैं, G20 group में India is the fastest growing economy as per the government claim. Third, the GDP. अब normally what is the full form of GDP? हमने जब basics of Indian economy देखा था, what is the full form of GDP? Bhakti, do you remember? What is the full Gross form of domestic GDP? product. Sorry? Gross domestic product, sir. What is gross domestic product? Can you elaborate or can you explain what this gross domestic product is? I know you know the answer, but I just want to have a revision. Can you speak, Bhakti? Okay. Can anybody else explain apart from Sagar that what is GDP? Yes. Shubhdeep or Swapnil or Omkar? ठीक है, Sagar, what is GDP? GDP is the market value of all goods and services which is produced within the domestic area of a country in a year. Yes. So GDP is basically simple. It is GDP is basically you can say it is sum total of all goods and services created by the government in that particular country. Just give me a second. Okay. Can you hear my voice? So GDP is what? GDP is gross domestic product. जिसमें हम कहते हैं ना कि it is sum total of all the goods and services created in a country in that year. But government ने उसकी एक नई definition या नया उसका elaboration उन्होंने कहा है. As per finance minister, GDP is government development and performance. So as per finance minister, Indian government is doing development and it is performing. So we have delivered on development and have better managed the economy. But as per Subramanian Swamy, this government is not, delivered the development. It is not managing the economy properly. That is what she's saying. But anyways, government claims that we have delivered on development and have better managed the economy. We are bringing down the fiscal deficit despite very challenging times. Now, what is this fiscal deficit? जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं कि हमने फिस्कल डेफिसिट को कम किया है. So what is this fiscal deficit? Any idea? Yes, Sagar, can you explain me what is fiscal deficit? As per finance minister, government ने पिछले कुछ दिनों में या challenging times में fiscal deficit को कम किया है. So what is the meaning of this fiscal deficit? I mean, sir, government reduced its borrowing from external. अच्छा, external borrowing को कम किया, मतलब government whatever government is spending वो borrow ना करते हुए अपने revenue को बढ़ाकर खर्च किया, right? So that is what Yes, government sir. is saying, that we are bringing down the fiscal deficit despite very challenging times. That is what is the claim of the government. The fourth important highlights as per the as per the finance minister, capital expenditure from the government will continue.
पिछले हफ्ते में हम कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं. दोज हु आर अटेंडिंग न्यूज़पेपर क्लासेस रेगुलरली, they might seeing that the newspaper में continuously एक चीज आ रही है, that one of the important factor, one of the important driver of the Indian economic growth, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है that हमारी इकोनॉमी 7.6% से ग्रो हो रही है पिछले साल में, एंड पिछले 3 साल से कंसेक्यूटिवली 7% में इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है, one of the growth engine or one of the driving factor of that growth is capital expenditure from the government. Capital expenditure from the government. So what is this capital expenditure from the government, Sagar? क्या है कि yes sir, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है? वन ऑफ द फैक्टर, मतलब नॉर्मली जब भी कोई इकोनॉमिक ग्रो होती है तो देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड इट, बट अभी पिछले 2-3 साल से इंडियन इकोनॉमी जो 7% जो ग्रो हो रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन G20 और अमंग G20, one of the important factor is capital expenditure from the government, right? So what is this capital expenditure from the government, Sagar? yes sir, government spend more money on capital which gain asset from it, like road, Example, railway, road हो लाइक गया, railways, गवर्नमेंट कौन से चीजों पे जब खर्च करता है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते मीन्स जो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज, पोर्ट्स एंड सम इन्वेस्टमेंट, irrigation facility providing to the farmers, etc. हैं. ओके, एंड ठीक है. And what is the driving factor? Like Indian economy was growing even during Manmohan Singh's time. At that time also there were challenging times. 2008-9 when Manmohan Singh was the Prime Minister of India. Even during that time also, global economy was slowing down. इसके बावजूद भी Indian economy grew at the rate of 10% per annum. So what was the driving factor of economic growth of the Indian economy during Manmohan Singh's period? सर जो एट हमने दैट पढ़ा टाइम था. द यस. यस जो डोमेस्टिक डिमांड था सर, उस समय बहुत ज्यादा थी सर, ये एक ड्राइविंग फैक्टर था सर एंड व्हाट उसमें. वाज द रीजन ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड? उस समय में जो डोमेस्टिक डिमांड था उसका रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ एम नरेगा सर, एम नरेगा से यस. लोगों को वेजेस मिल गई और उसके कारण वो डिमांड बढ़ गई सर. यस. तो एम नरेगा था. व्हाट वाज एम नरेगा? एम नरेगा वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, and as per that M Narega, government was spending money in creating rural infrastructure, like building toilets, building schools, and building, you can say, the roads. Internal rural area में जो इंटरनल रोड होते हैं उनको पाने के लिए खर्च किया गया था. तो उस स्कीम को खड्डे मारने की स्कीम कही गई थी. लेकिन उस समय में भी गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर, दैट वाज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. लाइक एम नरेगा इज आल्सो एन एग्जांपल कैपिटल ऑफ एक्सपेंडिचर. बट उससे क्या हो गया? रूरल एरिया में द इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर इंक्रीज, and because of increase in the agriculture in income of the agricultural labor, the demand in the rural area increase. And because demand for what? Of course demand for the consumer goods, like the you can say the for chicken, demand for FMCG goods like Colgate, toothpaste, TVs, fridge, bikes, and इन सारी चीजों का डिमांड रूरल एरिया में बढ़ गया. आपने देखा होगा कि 2007-8 के बाद में रूरल एरिया में इन सारी चीजों को लोग खरीदना शुरू कर. उससे पहले ये सारी चीजें रूरल एरिया में नहीं खरीदी जाती थी, बिकॉज द इनकम ऑफ द फार्मर्स, इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स वाज नॉट मच हाई, एंड दे वर नॉट एबल टू, और दे वर नॉट एबल टू बाय ऑल दिस एफएमसीजी गुड्स. लेकिन ये एफएमसीजी गुड्स की डिमांड रूरल एरिया में बढ़ गई, एंड दैट इज व्हाई डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज. एंड डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से जो चीजें वो खरीद रहे थे उन सारे चीजों का प्रोडक्शन बढ़ गया. मतलब प्रोडक्शन ऑफ द टीवी इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ द बाइक इंक्रीज, production of the Colgate increase, production of the shampoo increase, production of the drinking water bottles increase, and because of that Indian economic growth. So if you try to compare, अगर आप कंपैरिजन करोगे, the driving factor of the Indian economic growth even during the 2008-9 challenging period was the domestic demand. But what domestic demand government ने, this government has also spent more money on capital expenditure, like building roads, building ports. बहुत सारा खर्च गवर्नमेंट ने किया और काफी अच्छा भी किया है उन्होंने, मतलब they have built very good highways etc. लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ है कि there is no increase in the demand, there is no increase in the domestic demand, because the income of this low hanging people जो होते हैं ना, इनका जो लेबर का जो इनकम है, रियल वेजेस जो है वो नहीं बने.
और रियल वेजेस न बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक डिमांड फॉर द एफएमसीजी गुड हैज नॉट इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन इकोनॉमी जिसके पास में पोटेंशियल है कि जो 10% और 12% ग्रो हो सकता है, वो पोटेंशियल हम अचीव नहीं कर पा रहे। बट एनीवेज गवर्नमेंट ये कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू इट, फाइनेंस मिनिस्टर has said. As per finance minister, India Middle East European corridor, that is IMEC. Remember, this question can be asked to you in the prelims exam or it may also be asked to you in the mains exam. This IMEC project, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट कंपनीज, यूरोपियन कंट्रीज, इन सारे कंट्रीज को लिंक करने के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वैसे सिमिलरली इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या प्रोजेक्ट है। सिमिलर ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चाइना ने किया था, विच इज कॉल्ड एज RCEP समथिंग लाइक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। उसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देयर आर सो मेनी सच प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन स्टार्टेड बाय चाइना। तो उसको काउंटर करने के लिए एज वेल एज जो हमने रिसेंटली जो देखा था कि रेड सी में जो एक क्राइसिस आया था, वी हैव टू टेक अवर शिप्स फ्रॉम रेड सी एंड फ्रॉम रेड सी टू यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जो प्रॉब्लम आया है, इन प्रॉब्लम को फ्यूचर में टैकल करने के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। जैसे कि इंडिया से डायरेक्टली इंडियन शिप विल गो टू द Saudi Arabia, and from Saudi Arabia by railway it will go to the, I think it will be going to Jordan, and it will be going to some other countries, which countries हैं, directly it will go to the Mediterranean Sea, and from Mediterranean Sea again it will go by the ship and it will directly reach to the it will be reaching to the European countries. So this project is called as IMEC project, to be taken forward despite the disturbances in Red Sea. The withdrawal of 1.1 crore outstanding small direct tax demands, मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग है डायरेक्ट टैक्सेस के गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए, वो किया जाएगा, एंड इट विल बी अराउंड 3,500 करोड़ रुपीस विल बी गेट गवर्नमेंट, इसको यहाँ से रेवेन्यू मिलेगा। दैट इज व्हाट रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा से। तो आने वाले ये 2 महीनों के लिए जो भी रेवेन्यू रहेगा अराउंड 3,500 करोड़ दे विल गेट इट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस। There is no extension of the lower tax rate to new manufacturing unit. नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कोई भी टैक्स रेट कम नहीं किए जाएंगे up to 2024, that is till the full budget is declared. तो जब तक फुल बजट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा तब तक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, या कोई टैक्स रेट में कटौती भी नहीं होगी या बढ़ोतरी भी नहीं होगी। And it has also mentioned that we do not have a fixed target for disinvestment. Can anybody tell me what is disinvestment? Sagar, what is disinvestment? Those who have not attended my basics of Indian economic class, don't worry. I will be explaining all this concept in detail once I take the basics of Indian economic class once again. Yes, Sagar, what is disinvestment? सर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट का पहला वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बेच के उसमें से जो जनरेट किया हुआ रेवेन्यू है वो दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है सर। Right. So this disinvestment is a part of tax revenue or it is a part of non-tax revenue? It is a part of non-tax revenue, sir. Non-tax revenue. So we have Yes. seen that tax revenue, in the tax revenue, we have seen that direct taxes government is going to receive around 2,500 rupees. Government is going to receive from the 3,500 from the direct taxes, and indirect taxes में कोई there is no reduction in the indirect taxes, and government is also do not having any disinvestment target. कोई disinvestment target नहीं है, इस साल कोई disinvestment नहीं किया गया। That is said by दीपम secretary. रिमेंबर ये दीपम जो है ना, दिस इज द डिपार्टमेंट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट किया जाए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी गवर्नमेंट के जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, उन लॉस मेकिंग कंपनीज के शेयर्स बेचे जाते हैं और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, सो दैट दैट मनी कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ईदर प्लान्ड एक्सपेंडिचर और फॉर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सो इन दिस शॉर्ट टर्म, ये आने वाले 2 महीने में, इन दिस इंटरिम बजट, इन दिस इंटरिम period, there is no any disinvestment fixed target कोई नहीं। That is what दीपम secretary had said. ठीक है, ये जो जितने भी सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं ना, once you become an IAS officer, so you can also have the chances of becoming the secretary of that department. और आपको भी अगर आप IAS बनते हो तो जब जैसे आप गवर्नमेंट जिस समय में इंटरिम बजट देगा
So at that time, you also have the chances of having a press conference and inform about the government, the decisions. Last, we are not only aligning the fiscal consolidation. Fiscal consolidation, the term we have already discussed in the basic Indian economic class. Fiscal consolidation का मतलब होता है, जिसमें fiscal deficit को कम किया जाए. Like government will not, have more borrowing, especially from external sources. External sources से government कुछ ज़्यादा borrow नहीं करेगा. Government will try to spend whatever necessary expenditure is, that is from our internal resources only, rather than buying from the external sources. So we are not aligning with the fiscal consolidation path given earlier, but we are also bettering it. That is Fiscal Responsibility Budget Management Act. हमने देखा था, as per that FRBM Act, it has been made compulsory on the government to reduce the fiscal deficit up to 3% of the GDP of the country. तो वो जो पाथ इससे पहले जो दिशा डिसाइड की गई थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे. दैट्स व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर सेड. देन लास्ट इज द रेलेवेंस ऑफ द टारगेट टू रिड्यूस द सेंटर्स डेट टू जीडीपी रेशियो. इससे पहले हमने सिमिलर ऐसा एक वर्ड डिस्कस किया था 2 या 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में. वो टर्म था, एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज सिमिलर सच टर्म व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर? ज्योति, डू यू रिमेंबर दैट टर्म जो हमने, मुझे लगता है शायद 3-4 दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था. ऐसा एक सिमिलर वर्ड था जो मैंने आपको चेक करने के लिए भी कहा था और मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था. व्हाट इज दैट टर्म? डू यू रिमेंबर दैट? यस और नो? प्लीज क्विकली No, रिप्लाई. sir. ठीक है, कोई बात नहीं. No. यस सागर. सर टैक्स टू जीडीपी रेशियो. यस, दैट वाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो, राइट. मतलब टोटल गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है और टोटल जीडीपी कितना बन रहा है. तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो वाज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सर? सर इंक्रीजिंग सर. इंक्रीजिंग. और यहां पर क्या है? डेट टू जीडीपी रेशियो. डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब क्या है? डेट टू जीडीपी मतलब गवर्नमेंट का कर्ज और टोटल जीडीपी, इसका रेशियो जो है वो 40% के पास में रखा गया. नाउ टेल मी, डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मतलब जो गवर्नमेंट का जो कर्ज है वो हमारे जीडीपी का, अगर दोनों का अगर रेशियो हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? जीडीपी मतलब सर कम ऑफकोर्स होना चाहिए. पूरे इंडिया में जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज उस साल में बनाए गए हैं उसके कंपैरिजन में डेट कितना है, तो ये टोटल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए सर, एज कम होना कम्पेयर टू चाहिए. टैक्स टू बट जीडीपी. एज पर दी फाइनेंस मिनिस्टर, दैट डेट टू जीडीपी रेशियो दैट इज द टारगेट रखा गया, दैट इज अप टू 40%. मतलब टोटल जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा इंडिया में, मतलब टोटल जितना भी हमारा जीडीपी रहेगा उसका 40% गवर्नमेंट क्या करेगा? कर्ज लेगा. So that is what is mentioned here. It was said before COVID-19 period, and now it has to be examined. That's what Finance Secretary TV Somanathan said. तो ये 40% is very high. इसको कम करने की जरूरत है, इसको री एग्जामिन करने की जरूरत है. That is what TV Somanathan said. So these all the basic, the highlights of the today's interim budget. ये मैक्रो लेवल के कुछ चीजें हैं जो आज के बजट में है. इससे ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये जस्ट इंटरिम बजट है, 2 महीने के लिए है. जब भी फुल बजट होगा तो उस समय में हम और ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई डोंट थिंक दैट कि देयर विल बी एनी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस हाइलाइट्स ऑफ द इंटरिम बजट इन द प्रीलिम्स एग्जाम, बट 2-3 चीजें हैं जिसपे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. वन इज the question can be asked to you about the difference between the interim budget and the voter account. या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि why it is necessary to have a interim budget just before the general election. एक कंसेप्ट है वो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या जो दूसरे टर्म्स थे ना जिसमें ये टर्म्स अगेन फुल बजट में भी वो आते हैं, द टर्म्स लाइक फिस्कल कंसोलिडेशन और डेट टू जीडीपी रेशियो, या फिर एफआरबीएम एक्ट, या 2-3 और जो टर्म्स थे जो मैंने डिस्कस किया था, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट. इन सारे चीजों पे कंसेप्चुअली स्टैटिक पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गॉट इट? सो इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. बहुत सारा मटेरियल चैनल पे, ग्रुप्स पे, बहुत सारे जगहों पे, पोर्टल पे दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम बजट, बट मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा डीप में हमको पढ़ाई करने की जरूरत है.
बस इतना sufficient है for you to write the answer in both mains exam as well as in prelims exam. Clear? Yes, only 3 minutes are left now. अगर आपको अगर किसी इसमें से अगर कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सागर, शुभदीप, if you have any doubts you can ask. Yes, सर सागर. डेवलप्ड कंट्री सर डेवलप्ड कंट्री का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अबव 50% होता है सर, मतलब उनका कैसे Above ज्यादा होता है सर? 50% होता है, but these countries have the capacity to repay it back, sir. Like the countries like America, the countries like England or other countries, उनका जो debt to GDP ratio जो होता है ना high होता है because they have that capacity. India is still not, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है ना वो स्टेबल नहीं है. तो सपोज नेक्स्ट ईयर में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7% से अगर वो 5% पे आ जाएगा तो उस समय में विल नॉट बी एबल टू रिपे बैक द लोन व्हिच हैव टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. दैट इज व्हाई द कंट्रीज लाइक इंडिया, आपने देखा होगा ना लोग, सपोज कोई एक बड़ी कंपनी है लाइक अंबानी है, अगर वो कर्ज ले रहा है और कोई एक हम क्या कहेंगे मिडल मैन, क्या कहेंगे हम, इंडिया में होता है ना इनकम मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो हम कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम, अगर वो कर्ज लेता है तो ऑफ कोर्स उसका जो रिस्क होता है ना वो कम होना चाहिए. फॉर इट सागर. यस सर, मतलब दे हैव कैपेसिटी टू रिपे इट. जिस मध्यम वर्ग जो असतो ना जिसे हम कहते हैं मध्यम वर्ग, वो मध्यम वर्ग उतना रिस्क नहीं ले सकता है. ठीक है. या शुभदीप, भक्ति, ओमकार, ज्योति, आप लोगों में से अगर इंटरिम बजट को लेकर अगर कुछ कंसेप्चुअल चीजों को लेकर अगर कुछ डाउट है तो ये कैन आस्क मी. नो डाउट्स? Perfect. I'll stop it here now. We'll continue tomorrow. Actually, I was busy for the last 2 days. That's why I was not able to take the newspaper class. But I will try to continue the newspaper classes from tomorrow. So good night to all of you. Take care. See you tomorrow evening for the newspaper class. Fine, Sagar? यस सर.